A warm and lovely morning, my dear students. So today we are going to begin with the next semester of our this academic session. Okay. So therefore we will be starting with the first chapter of English prose. I am sending you the photo of the textbook which you need to purchase as well as the index so that you can get a clarification as to which is your textbook. Okay. So the very first chapter is many kinds of art. Okay, so we are talking about art, the drawing, the art, paint. So you all love the art period which comes in our school a lot. Yes, you enjoy moving your brushes from this end to the that end in the twisted way. Then your sketch pens giving a proper border. Yeah, making something extraordinary out of the ordinary. So these all are different kinds of art, and you cannot say that this art is good or bad. Every art has its own perspective, its own importance, its own interpretations, right? Yeah, interpretations means meanings. So in this chapter we will be learning about which are the various kinds of art by the prominent artists. Okay, some of them are given here in the form of activities, so we'll go through them, how they became means how their work became prominent, and why are they so effective. So let us start with activity 1. Yeah, activity 1. So it is saying that this unit is basically about art. Here an image is given to you. Yes. वो इमेज में बहुत सारी चीज़ है, लेकिन वो इमेज थोड़ा विंटेज शेड में है, मतलब थोड़ा डार्क है, बट यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज इट with little bit of concentration and attention. So this is actually a famous art by कुरिया एंड आइविस. ओके, कुरिया एंड आइविस का एक फेमस वर्क है ये. आपको क्या करना है, ये जो इमेज है इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही है उसका एक लिस्ट बनाना है अपने नोटबुक में. ठीक है, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू फाइंड इन दिस इमेज. Okay, so this is a prominent artwork which was printed out in 1872 by Courier and Eves. Okay, clear? Yeah. Okay, next is activity 2. Here we are going to talk about Vincent Van Gogh. Yeah, Vincent Van Gogh is a world famous artist. Okay, and he used to live in Netherlands, that too from 1853, that is 1853 से लेके 1890 तक वो नेदरलैंड्स में ही रहते थे. Okay, so he has painted more than 900 paintings. कैन यू इमेजिन, उसने 900 पेंटिंग से भी ज़्यादा ड्राइंग्स मतलब पेंटिंग्स उन्होंने बनाए हैं. तो यहाँ पे देखो जो आपको इमेज दिया है ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इमेज इज़ बेसिकली वन ऑफ हिज आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन. सो his some of the description about him is that he during his life he only sold one painting, but now his paintings are very valuable and famous. जब वो जिंदा थे, जब वो बनाते थे, तब उनका सिर्फ एक ही पेंटिंग बिका, और आज के डेट पे आप अगर उनकी पेंटिंग खरीदने जाओगे तो इट इज़ मच मोर कॉस्टलियर एंड वैल्यूएबल. Yes, so that means his work was so very majestic and very eminent that people really wanted to have them. Okay, so one of the photos is given. He used to like very thick painting that you can see in the image. अब अपने जब lightly paint करते हैं तो ब्रश का जो फ्लो जाता है और हम बहुत सारा क्वांटिटी में लेकर उसको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, उसका बहुत ही अलग वेरिएशंस होता है. यू कैन ट्राई आउट, लाइक आप देखना एक शीट ऑफ पेपर पे आप थोड़ा सा वाटर कलर लो, उसको डाइल्यूट करो वाटर के साथ, एंड देन यू अप्लाई इट ऑन दैट शीट. वो एकदम पतला लगेगा. ठीक है,
आपको शायद लाइंस भी दिखेंगे अगर वो पेपर में लाइंस हो तो, लेकिन वही चीज़ वो कलर में पानी मत मिलाओ, डायरेक्टली उसको अप्लाई करो, तो दैट विल बी अ थिक लेयर. Yes, yeah. So he used to do very thick kind of painting, and he loved colors. Of course, he has to play with colors. Therefore, he loved colors. So let us see one of his painting. Should have a detailed look about it. So some questions are given here. Let us go through them. So they're asking, what colors do you see in this image? What are the various shades that you can see in this image? See, first of all, I can say that the hardcore part जो एकदम thick thick है ना, वो ऐसा लग रहा है कोई grayish brown shade है ना? Means that is little bit a darker shade. It is fading in some places and it is rising at a some places, so that is some kind of shade, and yellow patches also you can see in between. Yeah, that can be the canvas shade. Yeah, okay, and in between some greenish yellow is also seen. So if you have a clear, means if you go minutely you can see many things. A tinge of purple is also there on the right corner, means a very little. So these are some of the shades that you can see. You all are familiar with the color concept, right? So आप तो easily इसमें बहुत सारे colors trace out कर सकते हो, लेकिन हाँ आपकी observation पे वो depend करेगा कि कितने कलर्स हैं. किसी को 5 मिलेंगे, किसी को एक ही मिलेगा, किसी को 2 ही मिलेगा. So it will vary. Do you see the rough structure of the canvas? Yes, you can see the rough structure of the canvas जिस पे वो पूरा बनाया गया है. How would you describe the painting? So what do you think कि painting क्या लगता है? तो ये painting को देख के ऐसा लगता है कि एकदम वो ropey structure है, मतलब wrinkles है, कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा उन्होंने किया है और एकदम wrinkles जैसा, मतलब थोड़ा खींचा हुआ. skin कैसा होता है, मतलब skin is a little bit like loosen, तो उसमें wrinkles होते हैं. The grandparents have ना that loose skin, तो वैसा थोड़ा wavy है ना. तो वैसे हम कह सकते हैं, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड लेकर बनाया गया है. थोड़ा बहुत लाइट है दिखने में, मतलब उतना भी गाढ़ा नहीं है बट है भी, और ब्राइट भी है, सॉफ्ट भी लग रहा है थोड़ा बहुत, है ना. देख के ऐसा लग रहा है कि लिटिल बिट सॉफ्ट है द शेडिंग, या एंड लिटिल बिट बम्पी, मीन्स कई कई जगह पे वो ऊपर नीचे भी लग रहा है, नॉट इन अ स्मूदर वे. रफली इट हैज़ बीन done. Yes. So I think you got the answer to the next question also. Is it thick, thin, heavy, light, dark, bright, soft, hard, flat, bumpy, or firm? I told you it is a bit thick, yeah, and bright, light. So it is soft also and a little bit bumpy also. So he used to make the strokes with his brush only. वो और कोई मोड हम नहीं यूज़ करते थे, वो ब्रश से ही करते थे, ठीक है. सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब उन्होंने जो स्ट्रोक्स दिए हैं ब्रश से वैन गो ने, वो क्या मतलब बहुत हार्ड दिया है कि सॉफ्ट दिया है? एक्चुअली इट इज़ अपियरिंग टू बी हार्ड बिकॉज इट गिव्स अ ड्राइड अपियरेंस, बट एक्चुअली उन्होंने एकदम सॉफ्टली उसको वेव आउट किया है, ठीक है. Yeah, and I too think that he has moved very smoothly and neither too quickly nor too slowly. एकदम नॉर्मल पेस में उन्होंने ऐसा लिंक आउट किया होगा, ड्रॉ आउट किया हो सकता है, ठीक है. तो क्या लगता है ऐसे मार्क्स उन्होंने कैसे बनाए होंगे? सो डेफिनेटली ही हैज़ अ mastery in that, so therefore he might have done it very carefully and elaboratively, means in a precise way, properly एकदम lines एकदम trace out करके ये marked out किया होगा. So we are just describing his painting over this activity. Okay, so Vincent Van Gogh from Netherlands, 1853 to 1890. Yes, he had painted more than 900 paintings. पूरी ज़िंदगी में एक ही पेंटिंग बेचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी. That is what you have to learn in life. Many things come in life and go, where we get something, where we lose a lot of things. But still, see, at the end of the journey, now still his works are famous.
So the end is always beautiful. Don't focus on the end. Live in now. Do your work. Don't focus and don't think about the results. Just do your work. That is what you should do. Whatever is assigned to you, do it completely, passionately, hardworking के साथ. ठीक है? And never ever lose the determination. You will definitely win out. Yes. Okay, next is activity 3. So below they have given us 3 paintings by Vincent Van Gogh. Okay, so in one of the painting it is he himself, that is called a self portrait. जब एक आर्टिस्ट खुद का पेंटिंग बनाता हो तो उसे हम कहते हैं सेल्फ portrait. So this is basically a self portrait of Van Gogh. The way an artist paints, the color he chooses and the shapes he likes are all part of his style. अभी आप लोगों को जब क्लास में मनीषा मैम पेंटिंग करवाती है, आप लोग सबका आउटलाइन आप एक ही इमेज बनाते हो जो बोर्ड पे दिया है, बट क्या आप सभी का पेंटिंग एक जैसा बनता है? नहीं, सबका अलग है. बट यू ऑल आर गिवन द सेम इमेज. स्टिल आप सभी का अलग है. मनीषा मैम का भी तो अलग है. या शी इज़ लिटिल बिट प्रोफेशनल, यू आर अपकमिंग प्रोफेशनल्स. यस, लेकिन if you notice, the one who is very much keenly interested in the shades, in this the way they are twisting the pencils or the pens, the way they imprint them, that is very different. Okay, जैसा उनका इंटरेस्ट है वैसा उनका वो स्टाइल बनता है. किसी किसी लोगों को आप देखना, जब वो पेंटिंग करते हैं उनका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होगा, वो डिज़ाइन ही वो यूज़ करेंगे, वो एक डिज़ाइन को प्रेफर करते ही है. वो आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है. उसको थोड़ा ऑल्टर करेंगे, लेकिन एक कर्व होगा, वो हमेशा ऐसे ही जाएगा. वो कर्व कभी भी उनका मतलब ये एंगल से नहीं आएगा, वो दूसरे एंगल से ही जाता है. तो वैसे सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है. ठीक है, तो वैसे ही वैन गो के ये जो पेंटिंग्स है यहाँ पे 3 है, इसमें भी आप ट्रेस आउट करोगे तो आपको दिखेगा कि वो एक कॉमन स्टाइल प्रेफर करते थे जो आपको तीनों पेंटिंग में दिखेगा. और अंडरस्टूड, मतलब ऑल द 3 पेंटिंग्स आर हैविंग अ कॉमन एलिमेंट, दैट इज द स्टाइल ही प्रेफर्ड. ओके, एंड द कलर्स एंड द शेप्स ही यूज आर ऑल्सो सिमिलर. उनको जो पसंद है वही शेड्स, वही टाइप के कलर्स ही वो हर जगह यूज़ आउट करेंगे, उसी स्ट्रोक में जाएंगे, कोई और तरीके से उसको वो ट्रेस आउट नहीं करते. सो यू कैन सी व्हाट यू कैन ट्रेस आउट इन ऑल द 3 पेंटिंग्स. सो आई विल हेल्प यू आउट समथिंग. देखो उनके तीनों पेंटिंग और साथ में हमने जो प्रीवियस पेंटिंग देखा उसमें भी वो किसको इम्पोर्टेंट करते हैं? वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को. ठीक है, उनको हम लोग जैसे पेंट करते हैं डायरेक्टली, हमने बहुत लार्ज क्वांटिटी में पेंट कर दिया, सो वी थिंक वो हो गया. लेकिन उनका देखो कहीं ना कहीं ऐसा लाइंस फॉर्म होता है, व्रिंकली रोपी स्ट्रक्चर देते हैं. ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से नहीं छिछरे जैसे निकले हो वैसे उनकी पेंटिंग्स में दिख रहे हैं. देखो फर्स्ट जो है वो एक लैंडस्केप है, उसमें भी उन्होंने वो ट्रीज में और ग्रासेस में वो लैंडस्केप में कहीं ना कहीं यूज़ किया है. और सेकेंड पेंटिंग भी कुछ ऑब्जेक्ट का है, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ फ्लावर्स समथिंग, उसमें भी उन्होंने वो एकदम माइन्यूटली वो ब्रश को एकदम मूव आउट किया है. देखा, जिसमें उन्होंने अलग अलग स्ट्रोक जैसा बनाया है, स्वर्ली लाइंस बनाई है. एंड इवन इन हिज ओन पोर्ट्रेट, सी द हेयर, in even his coat, on his coat also you can see the trace out lines. background में भी देखो वो wrinkly structure दिया गया है. So these are some of his specific style that he always preferred in his painting. Yeah, next second is what you can see, he has used different kinds of colors. ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक ही टाइप ऑफ कलर्स यूज़ किया, एंड काफ़ी डार्क शेड्स भी प्रेफर किए हैं एंड ब्राइट शेड्स भी. येस, एंड प्रेफरेबली आई कैन से ही हैज़ प्रेफर्ड ब्लू इन ऑल द 3 पेंटिंग्स द मोस्ट. ब्लू के बहुत सारे शेड्स आपको तीनों पेंटिंग्स में दिखने मिलेंगे, फ्रॉम गेटिंग लाइटर टू द डार्केस्ट. येस, या.
एंड देन यू कैन से द वेरियस ब्रशेस ही हैज़ यूज, अलग अलग साइजेस के उन्होंने ब्रशेस यूज़ किए होंगे फॉर पेंटिंग, फॉर 3D अपीयरेंस, फॉर माइन्यूट डिटेलिंग, एवरी सिंगल स्ट्रोक ही हैज़ मेड। तो ऐसा नहीं कि कुछ ऑब्जेक्ट रखे उन्होंने घीस दिया तो वो स्ट्रोक आ गया ना, ही हिमसेल्फ हैज़ ड्रॉन दैट, हिमसेल्फ हैज़ गिवन दैट stroke, so that is immensely beautiful. Okay, so what I have discussed here, that you can jot it down on page number 3. A space is provided to you at the top, there you can jot it down. Okay, understood? Yeah, after you describe over there, then count down the describing words you have used in that and jot those words below. मतलब कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपने यूज़ किए वैन गो के लिए और उनके आर्टिस्टिक वर्क के लिए, वो वर्ड्स सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. रोपी, ब्रिंकली, swirly, then vivid colors, so vivid, then bright, yes, blue, etc, etc. Okay, yeah. Activity 4. So, in this activity, we are going to discuss about one of my favorite artistic representation. Okay, and it is an integral part of our Indian culture as well as the festive mood right now which is going on, that is the Diwali, है ना. तो उसमें एक बहुत ही अलग आर्टिस्टिक क्रिएशन हम सब क्रिएट करते हैं. हमारा वो जो क्वाड्रेंगल है या 4 स्क्वायर वरांदा है या छोटा सा स्लैब है उस पर, इट्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलकमिंग आर गेस्ट्स, the gods and the goddess. Yes, so it is the Rangoli design. Yeah, the Rangoli. So we are going to discuss about Rangoli over here. So you have seen beautiful rangolis people make, right? हर एक रंगोली लोग जो बनाते हैं वो उसमें एक अलग ट्विस्ट होता है, एक अलग प्रेजेंटेशन होता है, उनका एक डेडिकेशन रहता है, राइट. हाँ, तो उसमें हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. बहुत सारे ऑल्ट्रेशंस और चेंजेस आ चुके हैं ये रंगोली डिज़ाइंस में. एक टाइम पे था कि हम सिर्फ राइस पाउडर यूज़ करके बनाते थे द ट्रेडिशनल फॉर्म, और कई जगह पे अलग अलग सब्सटीट्यूट्स जो भी अवेलेबल होता है लोग उसको यूज़ करके कोई ना कोई डिज़ाइन फॉर्मेशन करते थे. Yeah, so we use different types of colors. Okay, these are called gypsum colors. sand का वो जो उसमें से बनाते हैं ना वो colors, उसको gypsum colors बोलते हैं. then flower use करके कुछ कुछ लोग बनाते हैं, leaves use करके बनाते हैं. some people use the lamps to place upon the rangoli, and कुछ लोग ये जो directly lamps से भी बनाते हैं, है ना. हाँ, then sawdust, मतलब वो जो dust वो नहीं होता है sawdust, मतलब वो से क्या बोलते हैं द वुड कटिंग्स एंड ऑल, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं उसको भी डेकोरेट करके लोग बनाते हैं डिज़ाइंस. जुगाड़ भी से ना लाइक काइंड ऑफ यस ग्रेन्स यूज़ करके. सो मैनी वेरिएशंस आर देयर इन तमिलनाडु एंड ऑल. पीपल पुट रंगोली डेली and even in Maharashtra, and they too make in a traditional way, that is they use a rice powder to make this rangoli, and their rangoli is totally different, मतलब what twist and turns, and they do a freehand designs and all. ठीक है, and nowadays people are doing freehand designs, so you can see those alterations also. पहले था कि लोग ऐसे डॉट डालते थे पहले, है ना, फिर डॉट्स को जोड़ के हम डिज़ाइन बनाते थे लाइक हाँ, वो डॉट पेपर्स में से हम वाइट डॉट्स डालते हैं फिर उसको ट्रेस आउट करके. बट नाउ यू कैन सी द वेरिएशंस. बच्चे on YouTube's and all people do that, they just use objects directly, they put the color and they use spoons and other materials to draw out the designs and all. Yes, yeah. So these are some of the variations, alterations, specifications of the Rangoli designs that has been coming. Okay, now on page number 4 there are 4 rangoli designs given to you. I think second one is not that clear, but it is also a design of a peacock. Okay, and so 4 rangoli designs they have shown. What you have to do is you have to fill in this table. ये table को आपको fill up करना है जो पेज नंबर 3 पे दिया है on the basis of the images given on page number 4. ठीक है, तो पेज नंबर 4 पे जो रंगोली दिया है उसके हिसाब से आप ये टेबल फिलअप करोगे. थिंग्स में आप बताओगे कि क्या क्या चीज़ें उन लोग ने यूज़ किया है वो रंगोली को बनाने के लिए.
फ्लावर यूज़ किया है कि कलर यूज़ किया है कि लैम्प यूज़ किया, क्या यूज़ किया, वो सब लिखोगे. देन कलर्स, विच आर द वेरियस कलर्स दैट यू कैन ट्रेस आउट इन दैट रंगोली डिज़ाइन. देन यू लाइक द मोस्ट, आपको उसके अंदर क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पसंद आया. हाँ ओके, कभी कभी ऐसा लगेगा कि इतना फेड आउट है, इसमें क्या पसंद आएगा. कीनली ऑब्जर्व करना, कुछ चीज़ तो होगा जो उसमें पसंद आएगा, तो वो चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन करना. ठीक है, ऐसे ही आपको ऑल द 4 रंगोलीज का डिस्क्रिप्शन देना है. क्लियर. एंड जिप्सम कलर इज कॉमन इन ऑल द 4, बिकॉज रंगोली बनाया है चारों में उन लोगों ने कलर्स तो यूज़ किया है. सो यू कैन राइट जिप्सम कलर इन ऑल द 4 एंड प्लस और क्या क्या चीज़ें यूज़ की आपको लग रहा है वो भी ट्रेस आउट कर सकते हो. ओके, अंडरस्टूड. या after that, on page number 4, they are saying below those images, discuss in group or pair and conclude 5 essential qualities and skills to become a good Rangoli artist. According to you, what are the various means qualities a person should have to make a beautiful artistic असम रंगोली डिज़ाइन. ठीक है, ऐसे एक रंगोली डिज़ाइन को बनाने के लिए एक इंसान में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए हैं वो आपको डिस्क्राइब करना है. तो आप सेंटेंस कैसे स्टार्ट कर सकते हो. द रंगोली आर्टिस्ट शुड हैव, क्या क्या चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए. ठीक है, तो वो सब आप उसमें मेंशन करो. और अलग अलग फ्रेजेस और आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो बोला है इन लोग ने, जैसे कि ही और शी शुड बी मीन्स डूइंग इट विद अ चॉक और समथिंग लाइक दैट, वैसे आप बोल सकते हो. देन उनको कैसे ड्रॉ करना पहले तो वो आना चाहिए, तभी वो अच्छे से ट्रेस आउट कर पाएंगे. आई कैन रीड आउट सम ऑफ द पॉइंट्स. सी बेसिकली he should have a sense of art. Okay, the rangoli artist should have a sense of art, not heart, art, yes. Then he should have a taste in artistic also. He should know how to trace out. He should be patient enough to complete it in a proper way with every minute details. He should know the color combination, that which color goes well with what, how to use things, means homemade things or the homely available things to make beautiful designs with less cost. Okay, with least expenses, etc etc. ऐसे points आप यहाँ पे mention कर सकते हो. Okay, so this activity also you will write. Activity 5. Yes, activity 5. So in this activity they are discussing about some quotes. हम ब्लैक बोर्ड पे कोट्स लिखते थे ना, हाँ, तो वैसे कोट्स के बारे में डिस्कस हो रहा है. एंड यू नो कोट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. पीपल रैंडमली से सम lines and they bring out different meanings. Yes, so there are many such quotes which are based on colors पे बहुत सारे quotes होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ quotes दिए हैं एंड ये जो राइटर्स हैं जिन्होंने ये quotes दिए वो लोग ने उसके मीनिंग नहीं बताए. इट्स अप टू यू, आपको जैसा इंटरप्रेट करना है वैसे आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो. इंटरप्रेट करना मतलब उसको समझ सकते हो, उसको जिस एंगल से आपको लेना है यू कैन टेक इट अप. ओके, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी द फर्स्ट वन, कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर by Leigh Hunt. So Leigh Hunt has given that colors are the smiles of nature. Nature जब हंसता है वो कलर की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं. या फिर हम कह सकते हैं कि नेचर की जो ब्यूटीफाई है, ठीक है, जो ब्यूटी है उसको और ब्यूटीफाई करता है ये कलर्स. सो वो वेरिएशन मतलब नेचर को लिविंग बनाते हैं ये कलर्स, हम ऐसे भी कह सकते हैं. सो सी कितने सारे इंटरप्रिटेशंस आ गए है ना. तो भाई उसके आप जब रीड करोगे आपको अलग मीनिंग लग सकता है, मैं रीड करूँगी मुझे अलग मीनिंग लग सकता है. सो इट इज़ एन ओपन एंडेड वन. सेकेंड, कलर्स स्पीक ऑल लैंग्वेजेस. Given by Joseph Addison. Joseph Addison says that colors speak all languages. Yes. Next, David Hockney said, I prefer living in color. Okay, I love this quote. I prefer living in color. See, it means that
Nobody would like to have their life going in a just in a single path of way. There should be ups and downs. Yes, so that is what he is also saying. Or you can even say that he doesn't want always to be in a same mood. He wants to be in a different mood. He wants to be happy. He wants to meet new people. It could be something like that. He wants to change places. तो उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं. दिस इज अ ब्यूटिफुल कोट. आई प्रिफर लिविंग इन कलर. वी ऑल शुड प्रिफर लिविंग इन कलर. Then only our life will be colorful. Yes. Okay. So once you've gone through these three quotes, you might have observed that सब में कलर का स्पेलिंग अलग अलग दिया है. किसी में OUR दिया है, COLOUR दिया है, तो किसी में COLOR दिया है. कलर टीवी का चैनल है ना, वो कलर. हाँ, बट एक्चुअल में दोनों करेक्ट होते हैं. देर आर सम एक्सेप्शंस इन इंग्लिश, ओके, वेर इन द वर्ड्स sometimes will carry you with them in their word spelling, and sometimes without you also the meaning doesn't change, even the pronunciation doesn't affect. Okay, therefore you can use it and it is correct also grammatically. Like favorite, FAVOURITE भी हो सकता है, या FAVORITE भी हो सकता है. द नेबर एंड नेबर. द यू इज़ यूज इन मोस्ट राइटिंग इन इंडिया. हम हैं एक्चुअली जो यू प्रेफर करते हैं. बेसिकली जो इंग्लिश के वर्ड्स है जो ब्रिटिश मीन्स या अमेरिकन स्लैंग में से आया है, ठीक है, उसमें से हमने यूज़ करके अभी हम हमारे तरीके से उसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं, तो उसमें यू हम यूज़ करते हैं. बट जनरली विदाउट यू ऑल्सो योर स्पेलिंग इज़ करेक्ट. बट आपने देखा होगा कि आप पीसी पे टाइप करो या मैसेज में टाइप करो, वो अगर पहले से प्रेडिक्शन करता है वो टेक्स्ट को, तो वो रिमूव कर देता है या फिर यू इंसर्ट करता है. तो देन यू कैन सी द एक्सेप्शंस, बट एक्चुअली बोथ आर राइट ओनली. ओके, सो व्हाट यू विल डू इज go through the quotes, yeah, and beautiful quotes are there. What you will see, what I want you to do is, space is given to you on page number 5. They are saying circle the quote above that interests you the most. Remember that the author of the quote did not explain it, so you can tell what you think about the quote might mean. Write your idea about the quote's meaning. यहाँ पे आपको 3 quotes दिए थे. हाँ, आपको ये तीनों में से कौन सा पसंद आया वो नीचे मेंशन करना है ये स्पेस में, और आपको उसमें से क्या समझ में आया वो भी बताना है. ठीक है, तो ये 3 में से कोई एक सिलेक्ट करो और उसका क्या मीनिंग बता रहे हैं वो भी मेंशन करो. क्लियर? आपको क्या मीनिंग लग रहा है वो मेंशन करना. ओके, अंडरस्टूड? क्या नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6. मेक अ कोट about colors or any other idea of your own and print it nicely on the banner below. यहाँ पे आपको एक बैनर जैसा स्पेस दिया है, आपको एक कोट बनाना है. आप खुद का कोट बना सकते हो या यू कैन गूगल इट ऑल्सो. ओके, एक कोट बनाना है आपको कलर्स पे. आई वॉन्ट यू टू मेक ऑन कलर. ठीक है, वो कोट आप यहाँ पे लिखोगे. आपको प्रिंट वगैरह नहीं निकालना है. आप आपका स्केच पेन या कलर पेन्स, ग्लिटर पेन्स, विच एवर वे, फाउंटेन पेन, वट एवर, या आपकी खुद की आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग को यूज़ करके आप ये बैनर में लिखोगे. ठीक है, उसके बाद हाँ, ओके, देन दे आर आस्किंग यू टू डिस्कस योर कोट विथ योर क्लासमेट. मतलब उनका कोट पूछो कि तुमने क्या लिखा, देन यू विल ऑल्सो से अबाउट दैट. सो यू कैन ऑल्सो आस्क योर फ्रेंड्स दैट विच कोट दे हैव रिटन एंड यू डोंट नीड टू कॉपी द सेम. यू हैव टू मेक योर ओन. डिस्कस करो कैसा लगा एक दूसरे का कोट. ठीक है, एंड ट्राई टू एनालाइज. ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू डू वन थिंग. आपने जो कोट लिखा उसका मीनिंग आप कहीं पे लिख के रखना. एंड इट वुड बेटर अगर ये जो स्पेस दिया है इसमें कहीं पे भी आप लिख सकते हो कि आपने जो कोड बनाया उसका मीनिंग क्या है. एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू सेंड द इमेज ऑफ दैट कोड इन द मेल, इन द होमवर्क फॉर्म. ठीक है, होमवर्क में आपको ये कोड्स को सेंड करना है. ओके, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कोड्स. एंड येस स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आपको जो भी होमवर्क्स दिया जा रहा है वो मेल कीजिए, क्योंकि आपके मार्क्स भी रखे जाएंगे.
इंटरनल्स में बेस्ड ऑन योर होमवर्क, योर रेगुलरिटी इन अटेंडिंग द गूगल मीट. सो मेक श्योर यू डू योर वर्क, एंड जो भी सब्जेक्ट्स के होमवर्क नहीं सेंड किए हैं, डू सेंड इट विदाउट फेल, सो दैट टीचर्स कैन put up the marks for you, and it will be beneficial to you only. When you are at home, make sure कि आप अच्छे स्कोर कर सकते हो. You have enough and enough of time. ओके अभी आपको क्लास वर्क होमवर्क अलग अलग कंसेप्ट नहीं है. एवरीथिंग इज कमिंग अंडर द टाइटल ऑफ होमवर्क. सो मेक श्योर कि आप वो अच्छे से करो एंड स्कोर करो. ऑल द वेरी बेस्ट. ओके, टेक केयर.